अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल राइट। हमने M.Phill Zoology एडमिशन्स के सिलसिला में लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो ये दूसरा बड़ा लेक्चर है। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। द मेजर फैक्टर फॉर द क्लाइमेट चेंज इज़ हैबिटेट डिग्रेडेशन। हैबिटेट की डिग्रेडेशन से क्लाइमेट में तब्दीली आ जाती है। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट एनेक्टेड बाय द US कांग्रेस फ्रॉम द ईयर इज 1973। यस, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पर US कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया। ये एक्ट 1973 में पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटो कंजर्वेशन कैटेगरी, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटो कंजर्वेशन कैटेगरी है। Next, the process in which DDT and other organochlorine pesticides become more concentrated as they ascend the food chain is called cultural eutrophication, no acid rain, no bioremediation, no बायोमैग्निफिकेशन। यस, तो याद रहे बायोमैग्निफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें DDT या दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स वगैरह ये कंसनट्रेट करते हैं और फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ESA द स्पीशीज दैट इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड। ईसा के मुताबिक जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है उसे हम, जो एक्सटिंक्ट होने के करीब होती है, उसे एंडेंजर्ड स्पीशी कहा जाता है। What factor is responsible for global warming? That is increased concentration of carbon dioxide. Decline in fitness of hybrids or outcross genotype occurs due to genetic swamping. जेनेटिक स्वैम्पिंग की वजह से हाइब्रिड्स की फिटनेस में कमी आती है। नेक्स्ट, लॉगिंग, फार्मिंग एंड कैटल रैंकिंग कॉज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। लॉगिंग की वजह से, फार्मिंग या कैटल रैंकिंग की वजह से हैबिटेट की तबाही होती है। एक्सोटिक स्पीशीज so easily invade and dominate new habitats due to absence of their predators. Exotic species absence of predator की बुनियाद पर नई habitat पर छा जाती हैं। Which of the following fundamental factor is responsible for today's biodiversity crisis? That is एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। आजकल की बायोडाइवर्सिटी की क्राइसिस या तबाही का सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर स्पीशीज़ का एक्सटेंट कर जाना है। नेक्स्ट, दैट इज नॉट एन इकोसिस्टम सर्विस, दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इकोसिस्टम की सर्विस नहीं होती। द कैपेसिटी ऑफ द प्लैनेट्स इकोसिस्टम टू प्रोवाइड सर्विसेज विल बी रिड्यूस्ड if biodiversity reduces. It's too simple. If the biodiversity reduces, then the capacity of the planet ecosystem is to be reduced. Next, what factor increases possibility of microevolution, that is loss of genetic diversity. Loss of genetic diversity may increase the possibility of microevolution. Next, which of the following factor does not influence effective population size? That is mutation. Mutation is the major factor that doesn't influence effective population size. Which of the following is in situ conservation method? Farmland. Farmland is a part of in situ conservation method. Which of the following is the key factor that drive extinction vortex? Extinction vortex, that is loss of genetic variations. Next, according to island equilibrium model, rates of species extinction on islands depends on immigration rates, size of island, distance of island from mainland. So all of the above is right one. कोई भी आइलैंड इक्विलिब्रियम स्पीशीज़ की एक्सटेंशन के लिए इमिग्रेशन, आइलैंड के साइज, मेनलैंड से आइलैंड के साइज का फ़र्क पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट,
The minimum population size at which species can sustain its number and survive is known as minimum viable population. So minimum viable population वो population का size है जिस पर species किसी भी ecosystem में sustain भी करती हैं और survive भी करती हैं. Next, human harvesting of wild organisms at rates exceeding the growth ability of population is called overexploitation. Overexploitation की बुनियाद पर human harvesting of wildlife rate बढ़ता जा रहा है. One species is lost in one ecosystem but survive in another ecosystem. One the extinction is called local. अगर किसी एक इकोसिस्टम में स्पीशीज की तादाद कम और दूसरे में बढ़ती है तो ऐसी एक्सटिंक्शन को हम लोकल एक्सटिंक्शन कहते हैं. एक्सोटिक स्पीशीज आर आल्सो नॉन एज. एक्सोटिक स्पीशीज को हम endemic species कहते हैं. No. Non-native species, yes. Introduced species, yes. So both B and C is correct one. Next, according to IUCN, what percentage of nearly 5,000 known species of mammals are threatened? That is 20% according to IUCN. Identifying a biodiversity hotspot is difficult due to what reason? The true reason for identifying biodiversity hotspot difficulty is hotspot for one taxonomic group may not be for others. तो hotspot का एक taxonomic group दूसरे इलाकों के hotspot के group के लिए नहीं भी हो सकता. तो protected islands that are surrounded by degraded habitats are called zone reserved. Zone reserved is a correct one. These are the protected island portions. Next, what are the surrounding habitats of zone reserve called? That is the buffer zones. तो zone reserve के surrounding areas को हम buffer zone कहते हैं. Next, which of the following is not a process of biological restoration? Biological restoration जिसमें शामिल नहीं है, that is change in structure of site. किसी भी जगह की structure की change में biological restoration नहीं हो पाती. Which ethic gave rise the foundation of conservation biology discipline? That is evolutionary ecological land ethic. Evolutionary ecological land ethic. Next, the basic assumption of restoration ecology while restoring a degraded ecosystem is environmental damage is partly reversible. अगर environmental damage partly reversible हो तो फिर endangered ecosystem को restore किया जा सकता है. Next, zone reserve approach develops a dash around the reserve land. That is the soil and economic climate, yes, creates a relatively undisturbed areas, yes, areas for economic gains, yes, so all of above is correct one. Next, what type of areas provide economic incentives for long-term conservation? That is the zone reserve. Zone reserve long time conservation के लिए economic incentive provide कर सकते हैं. Next, small islands have high rates of extinction due to competitive exclusion, yes. Fewer resources, yes. Less diverse habitats, yes. So all of is right one. छोटे छोटे island अमूमन high rate of extinction में से गुजर सकते हैं. Next, which one of the following ethic emphasizes on anthropocentric value of nature? That is the resource conservation ethic, yes. So A is correct option. Who established U.S. Forest Service? That is Gifford Pinchot. Gifford Pinchot established U.S. Forest Service. Next, John Mayer developed dash ethic, that is the romantic transcendental ethic. Transcendental ethic को
जॉन मेयर ने डेवलप किया था. A small area where large number of endangered and threatened species are found. Among endemic species is called biodiversity hotspot. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रीजन के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती हैं. नेक्स्ट, बायोसेंट्रिज्म फोकसेस ऑन all life of forms, that is human, animals, ecosystem. कौन सी भी लाइफ लिविंग होगी उसकी हर हालत पर, हर शक्ल पर बायोसेंट्रिज्म फोकस करेगा. एक्सिटो कंजर्वेशन अप्रोच is advantageous in what way? Always allows evolutionary and ecological process to take place. Yes, allows gene flows and promote genetic variability. Yes, serve the purpose for research and ecological restoration. Yes, so all of above is correct. एक्सिटो कंजर्वेशन में एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल प्रोसेस को की हैपनिंग होती है. इसमें जीन फ्लो और जेनेटिक वायबिलिटी भी होती है. साथ इसमें रिसर्च या इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन भी की जा सकती है. नेक्स्ट, a protected area where significant ecological, biological, cultural and scenic value belongs to IUCN is which category? That is the fifth category. Next, which of the following is not in situ method for conservation? That is field gene banks. Field gene banks में method for conservation शामिल नहीं होता. Next, utilitarian philosophy of conservation is given in dash ethic. That is resource conservation ethic. रिसोर्स कंजर्वेशन एथिक में हम यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कंजर्वेशन को स्टडी करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज. अबाउट 25% ऑफ लैंड इज प्रोटेक्टेड नाउ. ये ठीक नहीं है. नेक्स्ट, आइलैंड बायोजियोग्राफिक मॉडल प्रिडिक्ट्स अबाउट एक्सटिंक्शन रेट्स. आइलैंड बायोजियोग्राफिक मॉडल अमूमन एक्सटिंक्शन रेट की प्रिडिक्शन कर सकता है. द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वायबल पॉपुलेशन is used in population viability analysis with the objective to predict a population's chances for survival over a time interval. एक ख़ास दौरानिए पर पॉपुलेशन के सर्वाइवल चांसेस हो सकते हैं. ये सर्वाइवल के चांसेस मिनिमम वायबल पॉपुलेशन साइज पर ही हुआ करते हैं. नेक्स्ट, which of the following statement is correct for survival of population? Population with low genetic diversity can survive. It's true that at low genetic diversity a population can survive successfully. Rates of deforestation recorded highest in Indonesia. डिफरेस्टेशन के रेट्स पाकिस्तान और फ्लोरिडा में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में ज़्यादा हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग हुसैन लेक्चर्स. स्टे ब्लेस्ड. तो अगली सीरीज़ के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रहिए. हमारे